In this module, we are again discussing the properties of monosaccharides. ये monosaccharides की properties हम इसलिए discuss कर रहे हैं कि these are useful in the structural formation of different monosaccharides units in their structural and as well as functional components of the monosaccharides. Third property of monosaccharide is that it is the synthesis of amino sugar. फर्स्ट हमने डिस्कस की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंडली हमने किया था उसकी कंडेंसेशन विद द फॉस्फेट ग्रुप्स, एंड थर्ड इज द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो शुगर्स with addition of amino acid or amino group to a particular sugar or a particular monosaccharide. If the carboxyl at C2 of the parent monosaccharide is replaced with an amino group, the corresponding amino sugar is formed. कार्बन एटम नंबर 2 के पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप उतार दें और उसकी जगह हम अमाइनो ग्रुप लगा दें तो अमाइनो शुगर बन जाती है. दिस इज द diagrammatic presentation of an amino sugar. We can see that the reddish area which is written as NH2, this is the second carbon, and we have attached, instead of OH group, we have attached a NH group. So this sugar, which is a glucose, is converted into glucosamine. So this beta D-glucosamine structure is formed by the addition of this particular amino group at carbon atom number 2. The amino sugars include D-glucosamine, which is a constituent of hyaluronic acid. Similarly, a galactosamine, which is also formed by addition of amino group at carbon atom number 2 of a galactose molecule, and it is constituent of a chondroitin or constituent of chondrosamine, which is constituent of chondroitin, and chondroitin is present in the cartilage. Cartilage जिस तरह ये हमारी कान के पे जो ये हड्डी है, ये सॉफ्ट हड्डी है. These are called cartilages. इन कार्टिलेज के अंदर डी ग्लैक्टोसामीन्स होती हैं, एंड सिमिलरली मैनोज के पे सेकेंड कार्बन पे अगर हम अमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो वो मैनोसामीन बन जाएगी. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द अमाइनो शुगर्स which is galactosamine. We can see that in galactosamine molecule, this NH2 is attached on this carbon atom number 2. इसी तरह मैनोजामीन में मैनोज इज द शुगर और इसके कार्बन एटम नंबर 2 पे ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है. सो ग्लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लैक्टोजामीन एंड मैनोज इज कन्वर्टेड इनटू मैनोसामीन. द अमाइनो ग्रुप्स which we have seen in the last slide attached on the carbon atom number 2 and form the glucosamine or manosamine are almost always condensed with the acetic acid as an N-acetyl glucosamine. Both glucosamine and galactosamine occur as N-acetyl derivative in more complex carbohydrates. ये more complex carbohydrates कौन सी हैं? For examples, glycoproteins, and in many parts of structural polymers which include the bacterial cell wall or different microorganisms. This is the structure of the N-acetyl glucosamine. We can see here that at carbon atom number 2, this amino group is attached, which is again attached with an acetyl group, which is shown here. Bacterial cell walls also contains derivatives of glucosamine, which are known as N-acetyl muramic acid. फ़र्क इसमें और N-acetyl ग्लूकोसामीन्स में क्या है कि उसमें अटैच हुआ था एसिटाइल ग्रुप, जबकि यहाँ अटैच हो रहा है
lactic acid, which is a 3-carbon carboxylic acid, and the linkage is again the ether linkage to the oxygen number to the ऑक्सीजन एट कार्बन एटम नंबर 3। वहाँ पे कहाँ अटैच हुआ था? कार्बन एटम नंबर 2 पे, जबकि यहाँ पे अटैच हो रहा है कार्बन एटम नंबर 3 पे, एंड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। दिस इज द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। यहाँ पे ये एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप C2 पे अटैच हुआ है, और C3 के ऊपर हम देख रहे हैं ये R ग्रुप जो है, दिस इज एन लैक्टिक एसिड विच इज अ 3-कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड। ये अटैच हो रहा है इसके ऊपर जाके कार्बन एटम नंबर 3 पे, देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग द एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। The amino sugars hexosamines are components of glycoproteins, gangliosides and glycosaminoglycans, which are also known as GAGs. We will discuss these gangliosides and glycoproteins and GAGs in next few modules. Several antibiotics like erythrocin, which is used for killing the bacteria in human body or even in the animals, it contains the amino sugar which is required for the activity of that particular antibiotic.